यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट, लेफ्ट से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट। हाँ यही आसिक में नाम कॉमेडी की बारिश बरसाएंगे। कॉमेडी की बारिश हाजिर जवाब देखिए इनको। You know, first of all, welcome and thank you for doing this for fans like me. All right, I want to ask you that this has been such a big hit instantly with the audiences, and its fan following has just been growing season to season. How do you feel first about this success, and then, of course, about the new season? So first of all, very warm welcome to all the friends in media who've come here today, braving all the rains. Thank you so much. You know, when you're in your third season, you know you've done something right. Absolutely. You know that the show has connected with the audiences. You know you're back with the third season because audiences really want it. Yeah. So it gives me immense pleasure to bring today the trailer of the third season of Comicstaan, the much loved, anticipated, really popular franchise of ours. बहुत खुशी हो रही है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. You know, this is a moment of great pride for us because this show has not just entertained people. It has given a platform to new emerging voices in India. It's made stand-up comedy aspirational for the youth of India. It's legitimized, I feel revolutionized comedy in the country. And I would also like to give a big shout out to OML, who've been our partners on this journey. It's been a long and arduous one, but they've been on this journey. My incredible team, who've helped, sat on multiple meetings and, you know, helped put this together. And of course, this season has a lot of first. You know, it's of course got a, fresh set of contestants who've come in. We've got mentors this time. We've got a fresh new host along with our inimitable Avish Matthew. Yes. And, there are interesting format changes that have happened. So it gives me immense pleasure to bring this show, the trailer of this show, to all of you today. Thank you, Aparna. Thank you so much. You know, 15 July. I want to fast forward to that date right now, but I have to be patient because I'm not God. Okay, so I will wait patiently. Thank you so much for everything you just said. And because you said you're incredible partners in crime, let me bring that partner in crime on stage at this point, the ones fueling this laughter machine for the last 2 seasons of Comicstaan, and of course this one as well, Gunjan Arya, CEO, OML Productions! कैसी हैं आप? एकदम ठीक हूँ. मतलब I just want to say that this is amazing. Thank you for doing this for us, the fans, because I am a fan. You know, you've had a long-standing relationship and association with Amazon Prime Video. Yeah. The synergies are quite evident. मतलब you guys also chose a color palette that could match each other. This is great. But I do want to understand outside of the clothes today, what are these creative synergies like? How has it been, you know, working with Prime Video to bring something that is so fabulous to the audiences? Sure. So first of all, a big thank you to Amazon for supporting this. We've had the incredible opportunity to build this platform together over the last few years, and that's really the beauty of the show, the fact that you get to experience so much more from the comedy world and really give a chance to them and spotlight new talent. So yeah. Give now some energy. Send! All right, great. Could we have the trailer, please? Leading, of course, with Aparna and then with Gunjan. Give them a big hand and a welcome again. Thank you. Only my friends at the back are giving a big hand. Thank you. All right, now let's call the people
जिनकी वजह से Amazon Prime Video के subscriptions बिकते हैं, ladies and gentlemen. Can I please have on stage the judges first? Zakir Khan! Satlana himself, ladies and gentlemen, looking very sharp, Zakir. Can I please have, in a velvety robe, Sumukhi Suresh? Could I also have the cutest man in a pink jacket tonight? This is Kenny Sebastian. Hi, Kenny. Hi. Yeah, you have to check the name tag and sit on your seat only. All right, and also joining them, the wonderful Neeti Palta. The judges have taken their seats. They're going to be doing some judging right now. Up next, the mentors. Ladies and gentlemen, can I please have Sapan Varma, mentoro ke mentor. Could I please have my favorite person on Instagram and in my real life, Rohan Joshi, please. Could I please be joined by the very, very awesome and funny Prashasti Singh. And also, can I please have the pink representation tonight, but only prettier than you, Kenny, and that is Anu Menon. Sorry, Kenny, sorry. Up next, of course, our favorite host, and that is Abhish Matthew on this stage, please. Now there is one problem, because I forgot to say don't sit. Now you have to stand again. So please stand. Okay, and all of you all come in one line, or the photographer will take one great photo, because this is the Avengers of Indian comedy, guys. The Avengers of Indian comedy, unite! Yeah, so come. The photographer, he gave me some instruction and all. Aye. All right. देखिए सर, ये अभी दोबारा नहीं होगा, आप अभी ले लो फोटो. Wow, have you figured who looks not as good as us, so we'll look better than them? Great. This way. This is the photo, guys. This is the photo. इसके पैसे लगेंगे. आज फ्री में ले लो. I think photographers चले गए हैं. आप लोग भी जा सकते हैं. अच्छा मेरा. Thank you. Okay, we're going to take a selfie because Ro is like, let's do this now. दोबारा से उठेंगे. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और ये सेटअप भी नहीं मिलेगा. So cute. Love it. Social media. अंग्रेजी में बहुत लंबा सवाल है. So I'm just gonna take it easy. All right. So what is your take on providing such a fertile, I love that word, space for comedy talent all over the country to Comicstaan? And we've also seen something, different with every season. So can you reveal to us today? Because that is what we want to know. Okay, इस season में क्या अलग है, ma'am? मैं पहले बताती हूँ कि क्या सेम है. अच्छा, क्या बात है? मजा, मस्ती और हंसी, ये तो सेम है. और अभीश मैथ्यू. He's the मजा मस्ती हंसी I was referring to. उफ. तो ये सेम है. क्या अलग है और and the fact that we are going to provide a platform to so many new voices. We are going to launch I believe the career of so many new aspiring comedians. That's for certain. What's different is the fact that there are mentors in every episode. There are new genres of comedy that have been introduced, and it's action-packed. Amazing, fun. awesome. Yeah. What can the season give us in return? Lots of laughs, lots of action-packed episodes, and also gifts like our new person Kusha Kapila. Yes, absolutely. Oh my God, Yeah. Thank you so much, Aparna. I'm going to take this to Gunjan at this point, Gunjan. This seems like it's going to be a lot of fun because Aparna ने जो बोला मैं मान रही हूँ इनकी बात क्योंकि ये झूठ नहीं बोलती, especially when she wears white. So I'm going to go with her. But you tell me, what are your expectations from this season? We're really hoping for next season. But Yeah. Be
BollyTV.com on fire. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. So I'm gonna keeping it short. I'm moving on to Zakir if you let me. All right, Zakir. Question to you. पहले तो आज माशाल्लाह. जी बहुत I just want to say, my man shows up nice and clean. I love it. I love it. इस सीजन में सख्त लौंडा कितना सख्त होने वाला है? नहीं बिल्कुल ही बह के पिघल गए हैं बिल्कुल. इतनी कॉमेडी की ग्लोबल वार्मिंग हुई कि हमारा ग्लेशियर बच नहीं पाया साहब. सर बहुत मजा आया. Thank you so much. I'm going to move on to Kenny. Hi Kenny. Hello. Kenny, apparently there are lots of sides that people know of you. So the question is very fun. Which side of you are we going to get to see in this season? All right, in season 3. Is it going to be the strict Kenny or is it going to be the nice and sweet Kenny? Oh, wow, interesting question because I felt we became too sweet in season 2. Yes. And I got a lot of comments saying, how can you like every joke? And why you fake laughing? So I went full 180 degree. I'm not laughing at all in this season. And I pulled a Simon Cowell. I was just like, you should give up on comedy. And I did full of that. And बच्चे रोके गए हैं इस season yes. से. Yes. Yeah, so that's what you'll expect in this season. Yeah, because I thought, all of you all had this sort of like, what I love first and then what I didn't like next. Yeah, they caught on very quickly. It was like a template, huh? Yeah. Listen, I watched this show, I know this. Sumukhi! Give it up for Sumukhi Suresh, everybody. Thank you. Sumukhi, आज तुमसे रवीना टंडन के vibes आ रहे हैं हाँ, शहर की लड़की. हाँ मैं वही जा रही थी मैं वही vibe था मेरा ऐसे रवीना मैम Correct. Looking like a snack, but let's talk to you about this season. You've hosted season 1. Yeah. Then you went on to become judge of season 2. Yeah. Do you think Abhish ever stands a chance of becoming a judge? This is Abhish's question, not No, my it's question. yours. Okay, just kidding. Bolo, What do you think? Sumukhi, bolo. I think Abhish should be judge next season and I should be host again. And Kusha and I should host. Yes. That'll be great. Oh my God, I've said this. OMS is going to yell at me. Anyway, continue. Manifestation. No, it's called manifestation. Great, Yeah, awesome. yeah. But talk to us about the contestants in this season. Don't tell us their names or Okay, anything. okay, cool. Okay? All right. Just tell us what do we expect from them. Yeah, the season 2 was very, I'll tell you why personally, like it was obviously kaun jeetne wala hai, but season 3 it's just a high and low throughout. Like you never know ki kaun jeetne wala hai kyunki sabhi kill kar rahe hain. And it's, yeah, they're all extremely rude and roast mein bahut roast kiya mujhe. मुझे तो छोड़ा ही नहीं मैंने उन्हीं की वजह से जिम जाना शुरू कर दिया अभी तो. Thank you for that, Sumukhi. अगर आपको जोक समझ आया तो ताली बजाएंगे. Why don't you all do this in your comedy shows, guys? अब उनको पहले से कैमरा पकड़ा उन्होंने फिर ताली भी बजाना is too much. तो हम आपके लिए ताली बजा देते हैं. Oh, Yeah. so sweet. All right, up next, Neeti. I hope you have a mic. Thank you. 3 consecutive years of being judge. How judgy are you because of Comicstaan? I'm judging you because that was 2 consecutive years so far. 3. Two. But how judgy has it made you? भाई I'm from Delhi, so I'm तो born judgmental. क्या बात है? इससे ज़्यादा क्या ही बोले? क्या बात है? इस साल या इस सीजन में क्या की टेकअवे है बताइए? Key takeaway ये है to discourage contestants as much as possible so that your career is not in danger in future. 1 second, this time season. Oh, sorry, seems did I like- say that aloud? Yeah, thanks. It seems a bit high on the snack, guys. Are you all making a departure in this season? Okay, maybe. 15 जुलाई को पता चलेगा. All right, now coming to our mentors, ladies and gentlemen. थोड़े से अच्छे हैं. अगर judges खड़ूस principals हैं, तो आप sweet teachers हैं, PT teachers की तरह, हमारे दोस्त. So, I just called you all PT teachers. Enjoy. Fantastic. Sapan, we're going to start with you. Amazing. I'm wearing white PD teacher pants also. So I'm Love. ready for it. Love. Sapan, I call you in my head mentor okay mentor. Because आप पूरे टाइम यही करते रहते हैं आजकल. तो कई celebrities को mentor कर रहे हो, यहाँ पर contestants को mentor कर रहे हो. हाँ, तालियां होनी चाहिए. Yeah. तो क्या मामला क्या है? What is this mentor relationship with yourself? I've realized I'm doing too much mentorship and very little comedy now. So I think, I love doing this. It's a lot of fun because as a comedian, when you go on stage every day, you're very vulnerable. As a mentor, you can show off. You're like, too funny nahi hai. दूसरों को बोले पड़े. Or you need to work harder. So it feels like, you feel like you have some power finally on stage. Finally, you say. Yeah. I just want to say, in that sentence, Sapan just told us the rest of his life. बाकी के time में ऐसे feel नहीं करता, लेकिन जब मैं यहाँ पर होता हूँ. 100%. As a mentor, you feel like that. Yeah, you're right, you're wrong. As a comic, ask everybody when you get on stage.
You're being judged every day. I don't know what you guys are talking about. लोग आपके shows के लिए टिकटें पैसे देके खरीदते हैं Judge और वो करने आते के लिए. हैं. Judge करने के लिए. Judge करने. I don't know. That's not me. I'm big fan, guys. Big fan. Thank you so much, Sapan. I'm going to take that to Rohan. Hi, Ro. Hi. आप तो कभी नहीं सुधरेंगे. रो. Hi, Ro. Hi, Ro. आप तो कभी नहीं सुधरेंगे. नहीं, बिल्कुल You've नहीं. not learned your lesson. Not learned my lesson. Because I believe you are roasting something even in 2022. देखो, I would like to point out, I have learned my lesson. ठीक है? Okay. इस बार मैं रोस्टिंग सिखा रहा हूँ. ताकि फ्यूचर में कोई और जेल जा सके. राइट? मैं लोड ट्रांसफर कर रहा हूँ. कि बेटा अब तुम जाओ कोर्ट में, ठीक है? तुम्हारी बारी. हाँ, तुम्हारी बारी. And it's really fun actually teaching roasting because you always get to a point where first they're telling you jokes about everybody else, right? I came in the middle of the season. तब तक they have learned to hate the judges and each other. So I get to harness that energy. Correct. Right? Then the second thing is, sometime in the middle of telling you the jokes, they also tell you the jokes about yourself. So the ones that hurt, you can just be like, nah, ये funny नहीं है. Ooh, nice. बिल्कुल nice, funny नहीं है. nice, That's what I did basically. तो हाँ. I can't wait for this. And honestly, I'm so happy that you're here. So I give just it up want to for say, before the show airs, before everything, opinions expressed by the contestants belong solely to the contestants themselves, and Rohan Joshi takes no responsibility for opinion of concern. Thank you. Woohoo! All right, I'm going to take this to Prashasti up next. Prashasti, what a journey. All right, let me just start with that. Thank you guys. मतलब उसी show पर, you know, this is the feeling when you pass out of college and then you come back to college as a judge and then you're allowed to do things that you're not allowed to do. उससे better है थोड़ी हाँ. Well, you know that feeling better than me because ये तुम्हारी journey है. Why don't you talk to me about that very aspect of coming back as a judge? As a mentor. Yeah. I think it's of course it's big, it's overwhelming, and I think my part in mentoring also mainly was कि तुम लोग मुझे बताओ. I understand what because I think what we went through for 2 months, these guys went through for 2 years because you know of course the shoot took a long time. So definitely it felt very good to connect with these guys. It also felt good to see that they are far more on their feet than probably we were. हम तो बहुत बच्चे थे, and genuinely I think this is just goes on. Well, I came from a background where I was like reality shows से किसकी life बनती है, and then I used to be on the other side. I was like, I've done enough of this, okay? So, Once again, Aparna has just done a dramatic head turn. and no, I'm just testament. Like I'm here to to show and to see कि yes, बन तो सकती है life. So yeah, very happy, and I'm looking forward to how people receive this season. Yeah. Well, thank you so much. And once again, congratulations. Give her a big hand, guys. All right, I'm going to take this to my favorite ex-Lola Kuti in the house, Sugamana. Sugamana. Allah, thank you. Anu, this is your first tryst, with Destiny, not Comicstaan. Yes. Yeah. Only people who studied that in school get that joke. So I just want to say, anyway, talk to me about that experience. Well, first now I'm at a stage where they say, Anu ma'am. So I said, if you want to get on my good side and want those extra points from me, I think you should quit the ma'am there. But no, I used to play teacher when I was 4 years old. So I felt like that was, I worked up to this moment in my life. No, it was great because I was doing sketch comedy. So, and one of the contestants told me, they said, Anu ma'am, I grew up 10 kilometers from Nawazuddin Siddiqui. I said, एक हफ्ते में नहीं होने वाला है बेटा. There are limits to people's talent. But no, they're just a fantastic bunch of, and they're also very close, I feel, this season because they've been together for a longer period of time. So they're genuinely close and they like each other and immensely talented. Like they blow you away. Like in 1 week, the kind of progress they make from where they start to where they finish is outstanding. हो गया फिर एक हफ्ते में. That's amazing. Thanks, Anu. Thank you for chiming in with that. Can I please have my really cute Abhish Matthew? Please, everybody. Abhish Matthew fan club should be strong right now.
I'm like Santa Claus for Comicstaan. हर साल एक बार तो एक काम जलता ही है मेरा. है ना? Once a year you come down this comedy chimney. Nice, nice. Yeah, I only said nice. I have judged myself. Great. Comic host, dost, people look at you and they're like, Abhish आ गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, correct? Oh, shit, okay, I'll take it. But I also find that you've been, I mean, kahin na kahin your niceness ke piche there's got to be something about Abhish that is like strategic and evil, I think. Yeah. Because everybody who co-hosts with him, doesn't come back next season. लेकिन तू यहाँ पे है भाई. जैसे कि वो बंदा जिसकी गर्लफ्रेंड हर साल बदलती है, तुम तो यहीं पे हो. देखो राजनीति का काम ये है. Thanks for that. But let's talk to us about your co-host. Yeah. You know, I am very excited that Kusha Kapila has joined Comicstaan. So give her a big shout, guys. Also, I'm not so excited that she's not here right now. Yeah, unfortunately she's shooting right now. But How dare she? How dare she? पैसे कैसे कमा सकते हो तुम? कि उसकी मजाल इससे इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं दुनिया में. सो फोन कर तू. है ना? I wanna फोन try कर, seeing वीडियो if पे she डाल, answers. उसको बता मत यहाँ पे लोग हैं. Are you video calling her? Yes. Outstanding. Let's see. Let Just me call see her. first. Approve, then I'll show everybody else. एक मिनट हाँ. तब तक हम बात करते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है. कुशा के Yeah, बारे we're में just going to बता. watch Abhish not get the phone picked up on him. Abhish, Again. it feels like you're on a celebrity show, but you're not the celebrity and you're calling a celebrity and you said that you will call them and they'll pick up. You know, with our families it happens, right? Arey beta, you know Bobby Deol, great, call him. And I'm like, I'm calling Bobby Deol never pick up my phone. So, ऐसे हो गया तुम्हारे साथ? ABC for phone a friend, they pick up the call. I'm just saying. Abhish का सिर्फ 2 lifeline है केवल. Guys, अभी पता चल जाएगा whether Kusha Kapila is my true friend or if she's just a co-host on the Hey, show. she's not going to be back on next season because of you anyway. Wow. What's the point? I mean, She knows? Hey, but we are manifesting this, no? Oh, no, Kusha, to be honest, has been incredible since day one because generally we have interacted online, right? So, uske baad, live experience is very different. Like, all of us have extensive, how do you work a crowd? So, to see her come, पहले दिन में, she was able to work the audience and I'm like, हम इतने unique नहीं है क्या? But she did such a great job, episode 1, 2, 3, because what you guys don't get to see in the episode is कि हम अगर 2 घंटा shoot कर रहे हैं, so you get to see the best parts of it. So every time we cut, the audience still needs to be engaged. And that is something where Kusha, us, even the mentors and the comedians always give to the live audience. And it didn't feel like she wasn't part of the clan as much as she was leading the clan from the front. So yeah, Kusha Kapila, ke liye taaliyan. Very good. You can follow her at ABISHMATHEW. Just say. I just like to give a small update. Throughout that answer, the call was still on. उसने नहीं उठाया. उसने नहीं उठाया. What if she gave me the wrong number? Oh, syndrome strikes again. that's sad. But I if felt press this conference से पहले अगर call आ गया तो दोस्ती कायम है वरना negotiation further. वरना पता चल जाएगा स्टार कौन है. As simple as that, because Kushal will be like, ये क्यों phone कर रहा है? इसको जाने दो. But great guys, give them a big hand once again. I'm so happy that you guys are bringing this season to us. Up next, of course, you've been very patient answering my questions. I hope I covered everybody because sometimes that happens. You know, I just can't count too well. सबके सवाल जवाब हो गए? शुक्रिया. Okay, thank God. Just making sure. You know, usually you guys have the tough job of getting up on stage and entertaining people. And these guys, ये लोग जो बैठे हैं ना आराम से, आप लोग ही, आप ही. हाँ, सबसे बड़े जज तो यही हैं, क्योंकि लिखते हैं, ट्वीट करते हैं. तो हमने इस बार कहा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए. इनको आपका जॉब दे देते हैं, ओके, चंद मिनटों के लिए, और देखते हैं कि ये कैसे सर्वाइव करेंगे या नहीं. And they're going to swap jobs with mentors, judges, and the finest comics from Asia, the world, the globe, tonight. Okay? All right. And for that, mic aa gaya hai? Yes, great. Are you guys ready? Okay. For your first act? Yeah. Yes. All right, ladies and gentlemen, Mumbai wakes up to him if they want to listen to English, because otherwise they're waking up to me in the mornings on the radio. Can you please put your hands together for my favorite, Rishi? Yay! Hi, Rishi! All right, pump it up! All the best! Oh, yes. I have to just put it out there that I'm not a comedian.
but I do make drunk men laugh with the wiggle of my belly, which I'm not about to do right now because this is a very dignified audience. और ये सब comedy के दिग्गज बैठे हुए हैं यहाँ पे. Guys, it's very simple. I don't want to take up more than 2 minutes of your time because they're far more interesting than I could even be with my orange glasses. But the real shit out there are the auto guys, right? So I just thought I'd do something called an ode to the auto. And this is the time of the year when excitement around autos really, really peaks. तो ये रहा मेरा piece है, उसका नाम है An Ode to the Auto. आइंस्टाइन ने या पता नहीं किसी अक्लमंद आदमी ने सही कहा था कि दुनिया में 2 टाइप के ऑटो होते हैं मालूम. एक मुंबई वाले ऑटो और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऑटो. देखिए मुंबई वाले ऑटो जो होते हैं, ऑटो वाले खास करके, इनको बिल्कुल अपने जान की नहीं पड़ी है. स्वयं यमराज भी अंदर आ जाएं और बोले चलो तो बोलेंगे नहीं जाएगा. अब आजकल बायोपिक्स का दौर चला है, तापसी पन्नू भी बायोपिक कर रही है, फलाना भी कर रहा है, ढिमका भी कर रहा है. ऑटोबायोग्राफी लिखने में लोग किताबें छाप देते हैं, ऑटोबायोग्राफी तैयार करने में उपन्यास छाप देते हैं. ऑटो वाले साले इनकी ऑटोबायोग्राफी उनके पिछवाड़े में यानी कि ऑटो के बैक साइड में रखा जाता है. एंड बाय दैट आई रेफर टू द डायलॉग्स ऑन द बैक ऑफ द ऑटो. Just in case you were thinking I was talking about their posterior, which is not a very pleasurable sight, I imagine. तो ये डायलॉग्स तो आप लोगों ने देखे ही होंगे. मैं मेरी माँ के लिए जी रहा हूं. वाह. मेरी तरफ मत देख पगली, मुझ पर खुदा की नजर है. वाह वाह. और कई बार ये जो डायलॉग्स हैं मैं सोचता हूं कि अगर इन्हें छोटा किया जाए तो ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएंगे. तो कभी कभी ये लोग प्रोवर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मुहावरे. आचार ही सुविचार है. वाह. एंड समटाइम्स दे से इन इंग्लिश ब्रेविटी इज ग्रेट. तो सुपर वेग हो जाते हैं. वो देख रहा है. अबे कौन देख रहा है? ससुराल वाले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चेंजिंग रूम के बाहर खड़ा हुआ छोटू, वो देख रहा है. कभी कभी सोचता हूं कि जो ऑटो वाले हैं वो बहुत ही सक्षम, बहुत ही स्ट्रांग और लॉयल एम्प्लॉइज हैं, और सबसे ज्यादा बहुत ही सुरक्षित और सिक्योर एम्प्लॉइज हैं. सोचिए कि अगर ये किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होते और एचआर से डीलिंग होती, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. I mean, from a price point of view, from a speed point of view, साले 1 वे के अंदर घुस जाते हैं, नो एंट्री के अंदर घुस जाते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी आप जल्दी पहुंचे. कूलर बिकॉज डिस्को लाइट चालू करके परदेसी जाना नहीं, और द अदर वर्जन ऑफ द परदेसी विच इज तुम तो ठहरे परदेसी. कोई कैब वाला दे सकता है ये? कुछ कभी नहीं है, कतई नहीं. सिर्फ एक समय है, एक वक्त है, एक सीजन है जब कैब वाले थोड़ा सा ज्यादा कूल हो जाते हैं, और वो है मॉनसून का सीजन. क्योंकि मॉनसून में अगर आप ऑटो में बैठते हैं मुंबई के अंदर, then you get the feel of Imagica, yeah. Ladies and gentlemen, thank you for not laughing at my poor jokes. Wow. I had 2 minutes, the best I could do. And best luck, you guys. I can't wait to see the next season. Thank you. Cheers. Rishikesh, ladies and 1 second, you come here, teddy bear. I love you. Mwah. Absolutely love him because अगर आप लोग सिर्फ ऋषिकेश को रेडियो पर सुनते हैं, आज आपने 2 चीजें विटनेस की. He used 2 great words. One of them was saksham, which I'm sure that you all were shocked. And the second was what? Cliched. What did you say? It was amazing. I was just like, wow. He can take my job and every presenter's job on the air. Sir, आप ऐसे मत कीजिए, please. थोड़े हम बच्चे, आप mentor, हम बच्चे. Thank you so much. Are you guys judging in your heads? Thank you. है ना? Tomorrow 7 a.m. on the radio. है ना? We will give our full review. Yeah. Oh. In the spirit of fairness. Oh. Nice. Alright, up next, Pooja. Are you here? Pooja. Hi, Pooja. Okay, guys. Okay, I have to tell you something.
पूजा, I thought I had the coolest job in the world because radio and all that. लेकिन पूजा जहाँ काम करती है, उस जगह का नाम है, take a guess, Awesome TV, guys. Awesome TV की पूजा कैसी हैं आप? Of course I know you. Come. आपको height issue है तो there are friends here who will help us. Yeah. देखिए आप स्टेज पे आ जाएंगी, चीजें होती रहेंगी. This is success. Don't worry. पूजा kill it. स्टेज पे आके धमकी से शुरू मत जस्ट धमकी पूजा कॉमेडी शुरू हो गई है. हाँ आ जाइए. हेलो हाय, मैं हूँ पूजा नवाथे. आई एम फ्रॉम ऑसम टीवी. स्टे सिंपली ऑसम. Yes! ये फेक वाली स्माइल थी, अंदर से लग गई है. मतलब सीरियसली डूड, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ? आई वाज लाइक यू नो, ये लोग किसी बात का तो बदला ले रहे हैं मुझसे. आई डोंट नो किस बात का बदला है, लेकिन आई एम श्योर कोई तो मतलब बड़ा पाप किया है मैंने. एंड वैसे नेहा ने कल रात मुझे फ़ोन करके बताया मुझे कॉमेडी करनी है. तब से मुझे एक ही सपना आ रहा है, मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, मैं जोक्स मार रही हूँ, लेकिन कोई नहीं हंस रहा. कोई भी नहीं हंस रहा. कोई नहीं हंस रहा है. हेलो, मतलब सपना सच करना ज़रूरी नहीं होता है. यू कैन लाफ. रिलैक्स. मैं यहाँ पे रिपोर्टर बन के कॉमेडी कर रही हूँ, इससे बड़ा जोक क्या ही हो सकता है, राइट गाइस? वो भी मतलब हम मीडिया वालों के शक्ल पे हमेशा 12 बजे होते हैं, कंधे पे पूरी दुनिया का बोझ होता है. वो उन लोगों के सामने डिट्टो, मतलब सेम फीलिंग. चीयर्स गाइस. एनीवेज यू नो, सपनों का शहर है मुंबई, राइट? लेकिन सिर्फ सपने ही फ्री में मिलते हैं यहाँ पे. इन मुंबई you can only have fun while sleeping, because the moment you open your eyes, सांस लेने के भी पैसे देने पड़ते हैं यार. I mean, उस दिन मैंने जोर से छींक क्या दिया, उस पर भी GST लग गया. I mean, यार क्या कर सकते हैं ना. वैसे यू नो, मुंबई में 2 टूरिस्ट प्लेस बहुत ज़्यादा फेमस है. गेस करो. नहीं पता? एक तो मरीन ड्राइव अपना, और दूसरी मुंबई की लोकल. I mean, फिलहाल ना घर पे मतलब रिश्ते विश्ते देख रहे हैं, शादी वादी का माहौल है, और बॉलीवुड ने इतना ज़्यादा हाइप किया है ना मरीन ड्राइव को. चलो उसके ऊपर ही बात करती हूँ फिर. मतलब मरीन ड्राइव के बारे में जब आप सोचते हो, क्या कुछ याद आता है? मतलब एक छाते के नीचे बारिश में रोमांस करते कपल, हाथ में हाथ पकड़े जाते हुए रास्ते पर, मतलब वो रोमांटिक सा माहौल, और समंदर में यू नो लहरों के साथ खेलते हुए कपल. इक्वली सब बांटा होता है वहाँ पे. तो मैंने सोचा चलो मैं भी जाके थोड़ा सा एंजॉय करती हूँ माहौल, यू नो प्रैक्टिस करती हूँ कपल बनने के बाद कैसे रोमांस करना है, अंदर से आना चाहिए ना. बट वहाँ जाने के बाद मुझे क्या मिलता है पता है? क्या मिलता है? कूड़ा, कचरा, तन्हाई, और चने ले लो चने, चाय गरम चाय. आई स्वेयर गाइस, प्यार तो दूर की बात है, मरीन ड्राइव पे एक टैक्सी भी नसीब नहीं होती. मतलब अगर उबर ओला भी कर दो ना, तो वहाँ पे पहले ड्राइवर को बताओ, हेलो हाँ यहाँ पे मरीन ड्राइव पे हूँ. मैडम जी कहाँ मरीन ड्राइव पे? मरीन ड्राइव तो इतना लंबा है. ने बोला वो 2 कपल दिख रहे हैं ना वहाँ पे, हाँ छाते के नीचे बैठे हैं, हाँ जो जोर जोर से झगड़ा कर रहे हैं, हाँ जिसके हाथ में फूल भी है वो लड़की दिख रही. ओ गिर गए, फेंक दिए फूल. एनीवेज प्रोसेस बताती हूँ. मतलब मरीन ड्राइव से चर्च गेट स्टेशन तक जाने का बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है. बताती हूँ, यू थैंक मी लेटर. मतलब पहले पॉकेट मारना पड़ता है, फिर पुलिस की वैन आती है, फ्री में लिफ्ट मिलती है, जाओ आप चर्च गेट पुलिस स्टेशन. बस पुलिस स्टेशन के बगल में ही चर्च गेट स्टेशन. डोंट वरी, आई नो. वैसे और एक रोमांटिक सी प्लेस है मुंबई में, जुहू बीच. गए हो कभी? गए हो जुहू बीच पे? चलो इवेंट के बाद चले जाओ, पास में ही है, बगल में है ना. तो जुहू बीच पे लोग यूजुअली जाते हैं रेत और आधे नंगे बच्चे देखने के लिए, करेक्ट. बट आपको असली मुंबई देखनी है ना, सुबह 5 बजे पहुंच जाना, ठीक है? आपको सुबह आकाश रिकॉर्डिंग बंद कर, कुछ तेरे लिए बता रही हूँ. सुबह 5 बजे पहुंच जाना. सेक्सी सी लड़की ऐसे जॉगिंग करती दिखेगी एक तरफ, ठीक है, और दूसरी तरफ ये मनोज कहाँ गया, क्लिक क्लिक क्लिक, पेपराजी कहाँ है मनोज, है ना, वही कर रहा होगा. मतलब क्लिक क्लिक पेपराजी तो भेजना है. मतलब यू नो
दोनों 2 in 1 एक साथ। वैसे आपका नसीब अच्छा हुआ ना तो सुबह सुबह ए झकास अनिल कपूर भी दिख सकते हैं, लेकिन गलती से भी उनके साथ रेस मत लगाना, मतलब he'll beat you up and he'll ask you, मतलब थक गए, उम्र हो गई है तेरी। I mean, you know, race 3 में it would have been good if Anil Kapoor would have been actually more entertaining if, you know, he would have been asked to be more mean to the racers. I mean, just imagine, you know, Anil Kapoor saying, "ए Teletubby की औलाद दौड़ यार दौड़, असली माँ का प्रोटीन मिल्क शेक पिया है तो दौड़। साला अभी मेरे को दौड़ना पड़ेगा, टमाटर अंडे तो नहीं लेके आए हो ना, मतलब टमाटर ठीक है स्किन के लिए अच्छे, लेकिन अंडे, हेलो वेजिटेरियन हूँ। Thank you, bye-bye. वाह मैन, तुम्हें मैं घर लेके जाऊंगी अपने, तुम बहुत क्यूट हो, कितनी क्यूट है ना, इसको दो यार ताली, बहुत ज्यादा यार। Also let me tell you, पैसे के लिए तो हम कुछ भी करेंगे, लेकिन ये बिना पैसों के आप लोगों को हंसाना बहुत बड़ा काम होता है। प्लीज इनको बहुत सारी तालियां दे दो। Oh my God, so good, both of you. Judged in your head? Great. What a character in your head. Wonderful. I feel like Superb. both the sets were observational Observational comedy. comedy, And yeah. what they brought onto the table was understanding the dynamics of Mumbai. Very well done. Wonderful. अगली season में Wonderful. Also पता चलता है कि ऐसे कॉमेडी सिर्फ हम लोग कर सकते हैं मीडिया वाले, क्योंकि हम ही घूमते हैं सड़कों पे, ऑटो रिक्शा टैक्सी जुहू बीच मरीन ड्राइव, हमारी रियलिटी है ये सर। The commonality of this was amazing. All right, let's now open the floor for media Q&A. I'm sure you have questions for the wonderful people on stage. You know the drill. It's very simple. You just have to raise your hand. Do point a question to who you want to ask the question to. So, for example, अगर आप अपर्णा से शुरू करना चाहते हैं, and I think Aparna, that's what we're going to do. We're going to ask you the first question. Who is it in the audience? कौन है? Yes, hello. बहुत ज्यादा बोल दिया दीदी ने अंग्रेजी में, तो कोई बात नहीं, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते तो पूछिए। Anybody? Thanks, Nia. Thank you so much. First question, Rishi K. Rishi K, please. Thank you, Rishi. This one's for Aparna. I like that, you know, you're doing these formats. There's one mic stand, there's Comicstaan, and obviously if they're successful, they get repeat seasons. And I also like the fact that famous comedians get to do their stand-up specials. But my question to you is, will we see new formats continuing in the comedy genre in the future? Like radical new formats, and not just future seasons of existing franchises and specials. So if you could just underline your plans in terms of new IPs or new formats in the comedy genre. And big ups to you, Aparna, for supporting comedy. I mean, comedy is serious business. I mean, I remember Saban telling me this once when he came into studio, saying that there's not enough comedy that is supported on mainstream media, whether it's radio or television and stuff. And it's great to see OTT coming in and providing so much support. And the big thing in this is for small town India, for satellite townships, and you know, any kid can just come out there and take inspiration from them and go where they go. So big ups to you, and you can answer my question. Thank you. Thank you. Yeah, that's a great question. What's happened in the last couple of years is I think we've managed to create a very loyal fan base for comedy. So our commitment to comedy will continue. Before I start answering this question, I want to tell you that One Mic Stand did incredibly well. In fact, now we are taking that format to other territories, and it's now being done in other territories, which is fantastic. We are always open to new ideas. Anybody who has new formats, please come pitch to us. Always looking for newer ideas. We are in fact enhancing the scope of the unscripted. We really want to open up and do more things, docu-series, true crime, investigative, and of course comedy. So always there, looking for newer ideas, newer pitches. If there are any, please come pitch them to us. Thank you so much, Aparna. I do want to answer that question on your behalf, everybody on stage. एक ज़माना था जब आपने कहा कि सपन ने कहा कि लोग कॉमेडी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. असलियत ये है 2022 में कॉमेडी सारी चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है. We've come a long way, baby.
Thank you, thank you, thank you. All right, our next question. Hi, ma'am. Who would you like to ask your question to? Mic आ जाएगा आपके पास. आप पहले बताइए. Mr. Yeah, I have a question with Mr. Rahul. Rahul, right? Rahul Dravid, that is Abish Matthew of No, Comicstaan. the one in white shirt. The one in white shirt. Rahul, yeah. Identify yourself, Rahul. So I have a question that you are mentoring roasting to your this thing. So after mentoring roasting, somebody had roasted you yourself also. So that's my question. Ma'am, the police roasted me lots in 2015. No, from the participants. Yeah, of course. I mean, part of being a mentor on the roast is that, I'm obviously also on stage with them. So I am as game for jokes. I'm as much fodder for jokes as anybody else at their roasting. So I was very clear with them from the start only that you have to make as much fun of me as you make of everybody else. Yeah. And don't pull your punches. In fact, it's easiest to make fun of me because I have no say in the judging. So they can say whatever they want to me and there are no consequences to their action. मतलब क्या maximum मैं WhatsApp पे block कर दूंगा. मतलब कुछ consequence ही नहीं है. So they did and it was a lot of fun actually. We all roasted each other and we had a lot of fun. There was even a moment where at one point give you hidden secrets from behind the show. The judges pulled me aside and they were like, ये क्या बोल रहे हैं बच्चे? कुछ मतलब ज़्यादा तो मतलब नहीं होगा. I'm like, भाई तुम लोग देखो and then they ended up having a good time I think, right? Yeah. So yeah, we all got roasted including me. Thank you. Thank you, Rahul. We love you. नाम तो सुना होगा. नाम तो सुना होगा. Yes, sir. Sir, आपके पास mic आनी चाहिए. Don't worry. Rohini, can I ask, please? You have a mic already? Yeah. Then please go ahead. Hi, my question is for Abish. Hi, sir. Akriti here from Absolute India News. Abish, I wanted to ask you that, you have been hosting Comicstaan since its inception. How has it been for you? And does, hosting comes naturally to you? Yeah, hosting does come naturally to me. I keep getting asked, do you want to become a judge? And I always feel those who can't do judge, no. What? No. Listen, only you say that. Come on. Those who can't do teach. Yeah, exactly. But, variation. I enjoy hosting the show a lot because I think I like interacting with a live audience at all time. If you're sitting and judging, it's a way tougher spot to be because you have to keep in mind that these comedians who are coming on the show have been doing some stand-up. They are very good. How do you judge? So technically, hosting is easy because you're like, hey, you like us, you like them, no? Hate them. But have you been offered to judge? I don't know if, I don't think it's an offer thing. Like these guys are literally a WhatsApp group. And if asked again, I would be hosting again and again and again. So if I do become a judge, that's probably because they found a better host. So, yeah. Hello. My question is to Sapan. Hi. Hi, Hello. I'm Divya from India Forums. Hi, Divya. So, as a mentor, how has it been for you? And is there any key points you keep in mind while mentoring your the budding comedians? Oh, And do you give them something from your own personal career path? It's been great actually. I think all of us can say mentoring has been a great experience also because हमें भी सीखने को मिलता है. कई बार honestly we act like very smart, but sometimes when they ask some smart question, like ये तो मुझे भी नहीं पता यार. Then we go home, we do some homework, we come back. So it's a great experience overall. And I think just the growth is very interesting to see. As I think Anu also said that in a week, it's very tough because the Comicstaan, whatever said and done, is a very tough format for contestants, When we all started, we just did open mic, we just did our kind of stand-up, we'll do only observation or something. They have to do 7 different rounds. And every week they have to excel at it. So just seeing the growth is very, very good. And just personal advice, the basic things that you can tell them ki ye karna chahiye, ye nahi karna chahiye, look at the audience this way, that way. That's all that we can tell them. Yeah. Hi, this is Sohail over here. Congratulations to your entire team. Hasana, it's a very difficult task. My question is to Aparna. We enjoy like comedy, sab log hasna to, logo ko acha lagta hai. And people are enjoying the show. But there is one section of people who really feel, कि ये जो comedy है, वो कभी हमारे कल्चर को खराब भी कर रही है. तो इस तरह के लोग भी हैं, तो उसको आप किस तरह से डील करते हो? मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक लाइन कहाँ पर ड्रॉ करते हैं कि समटाइम इन केस ऑफ कॉमेडी यू क्रॉस योर लिमिट्स आल्सो इन फैक्ट लाइक कोई वर्ड्स में हो या किसी तरह के, तो वो आप किस तरह से उस चीज़ को देखते हो जी?
इस शो के ज़रिए हमारा इंटेंट सिर्फ लोगों को हंसाना है, उनकी लाइफ में इतने डिफ़िकल्ट वक्त में थोड़ी सी सनशाइन लाना है. बाकी वी वांट टू बी एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पेक्टफुल टू ऑल द पीपल. तो पूरी कोशिश सबकी यहाँ पे सारे कंटेस्टेंट्स की यही है कि रिस्पेक्टफुल रहें, सेंसिटिव रहें और रिस्पॉन्सिबल रहें. Thank you. Hey, Vinita here from Ad Gully. Guys, here. Okay, so my question is to Gunjan ma'am. Ma'am, OML and Prime are from very good association from a longer time. So my question is, how do both the brands complement each other and in terms of creating and presenting such high impact content? Thank you. I think we've been the lucky beneficiaries. All of us here have had Amazon support from the get-go. They were the first platform to really come in and give comedy that space. And we've had the opportunity to create many, many shows together. So whether it's scripted, unscripted, and we're really looking forward to doing more work as well. Hello. Guys, one more question. Hello, hi. Pooja here from Awesome TV. Hi. उनको कंटिन्यू करना है जरा. Also पूजा जी, just give us a minute, yeah? Go for it. Guys, I am a big fan of all of yours. My mornings start from you, actually, because I am been a really good comedy fan from a longer time. So my question is for Prashasti. How is the journey from being season 1 from there till now? Oh, it's been great. As I said earlier that like if there was no Comicstaan, probably मैं अभी भी नौकरी के साथ में part time stand up कर रही होती. So and there's absolutely no exaggeration in that. Like I stepped into comedy because I did this reality show, and none of us at that time knew कि इस show का क्या होगा actually. It was the first season, and I mean, the platform that it gave me, uske baad se, like, I have to say this touchwood, there's been no looking back. Like, opportunities aati ja rahi hain. And comedy is hard work. But I think the thing is, when you get a platform like this, you also get a community like this to, to mentor you. Like, I think I benefited a lot from this constant mentorship जो Comicstaan के साथ शुरू हुई थी. और वो लगातार बनी हुई है over these 4-5 years. So I also feel very responsible कि that I think probably this is my chance to give it back to the people who are coming in now and help them with to propel their careers. Thank you, Prashasti. Siraj sir, have you gotten yourself a mic? Because if you haven't, then I'm going to come there personally and give it to you. Come. Sir, उनका हाथ तब से ऊपर है. आप जरा इनको mic देंगे. बहुत senior हैं. Sir, it's my honor. सर बैठेंगे सर बैठेंगे. सिराज जी प्लीज हैव अ सीट सर. जाकिर से किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा तो मैं सोचता हूँ कि मैं पूछ लूँ. सिराज जी कैन आई रिक्वेस्ट यू टू हैव अ सीट सर. थैंक यू सो मच. जी सर. ओरिजिनल कॉमेडी करना बहुत ही मुश्किल काम है और ओरिजिनल कॉमेडी को पहचानना उससे भी मुश्किल काम है क्योंकि बहुत सारी कॉमेडी किताबों से जोक से निकल के आती है. तो आपकी नज़र में ओरिजिनल कॉमेडी की क्या अहमियत है या आप उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, नंबर देते हैं? और इसी सवाल का दूसरा भाग ये है कि दूसरी तरफ मिमिक्री है जो किसी की नकल करते हुए आप किसी को हंसाते हैं. उसके दो पहलू होते हैं. या तो आप किसी की नकल कर रहे हैं, सिर्फ नकल कर रहे हैं, या आप नकल करते हुए उसको जोक बना के हंसा रहे हैं. तो इन दो तरह की कॉमेडीज़ में जजेस का क्या रवैया रहता है, ये आपसे जानना चाहता हूँ. जी, बहुत सवाल आपका बहुत अच्छा है सिराज साहब. दो बातें, पहले सेकंड वाला मैं आपका एड्रेस कर दूँ. तो मिमिक्री अपने आप में एक टैलेंट है अलग तरह का. स्टैंड अप कॉमेडी में थोड़ी बहुत मिमिक्री हम लोग करते हैं, पर मिमिक्री अपने आप में एक जॉनर. वो लोग बहुत शार्प माइंड होते हैं, बहुत बेहतर आर्टिस्ट होते हैं जो आवाज़ निकालने के साथ साथ उसमें जोक भी ऐड कर पाएँ. तो मेरे ख्याल से तरजीह जब दी जाएगी तो उसको दी जाएगी जो मिमिक्री की आवाज़ की एक्यूरेसी के साथ साथ उसमें क्या जोक डाल पाए. क्योंकि देखिए, आवाज़ किसी की इमिटेट करना वो ठीक है, पर उसमें एक्ट क्या बना आपका, है ना, वो भी तो ज़रूरी बात है ना. कि आवाज़ कॉपी कर ली वो तो एक इनबॉर्न टैलेंट है या आपने थोड़ा वर्क किया उसके ऊपर, पर आपका स्टेज पे जो एक्ट हो रहा है वो है कि आपने जोक क्या उसके अंदर जोड़े.
तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ओरिजिनल कॉमेडी की जहाँ तक मुतालिक मैं बात करता हूँ, मेरा ऐसा समझ है कि दुनिया में साहब कुछ भी नया नहीं है ना। अगर हम में से किसी को भी ये लगता है कि हम में से कोई नया कुछ कह सकते हैं तो बहुत ही छोटी सोच है वो। ठीक है, हज़ारों साल से ये दुनिया है ना और ताक़यामत रहेगी। बहुत सारे बड़े बड़े लोग हमसे अच्छे समझदार ज़हीन लोग रहे जो कह गए बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें। तरीका ये है कि जब कोई प्रेम गीत लिखा जाता है तो प्रेम गीत तो लिखा जा चुका है, पर हर बार हर दौर हर वक्त का जो उस वक्त उस लम्हे का जो एहसास होता है वो अपने आप में नया होता है। हम सब अपने आप में बहुत यूनिक सोल्स है ना, उस मौके उस लम्हे पे पैदा हुए दो माँ बापों से, है ना। तो हमारा जो मानना है, एहसास भले ही वो दुनिया में 100 बार कहा हुआ, जब आपको जब इश्क महसूस होगा तो वो उतना ही यूनिक है जितना पहले कभी किसी को महसूस हुआ हुआ। ऐसी जोक भी होता है सर, ठीक है। बस इतना और बता दूं कि मेरा नाम सिराज सैयद है और मैं filmfestivals.com की तरफ से पत्रकार हूं। अच्छा सर, परिचय देना ज़रूरी है इसलिए। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Ask a good question, get a great answer. That's what this is about, ladies and gentlemen. Next, last question. ये जाकिर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, सेंस ऑफ ह्यूमर तो सेंस ऑफ ह्यूमर है, चाहे आप छोटे शहर से बिलोंग करते हो या बड़े शहर से। मेरा पूछने का मतलब ये है कि आजकल ये जो दौर चल रहा है, छोटे शहर से लड़के आ रहे हैं, आप खुद छोटे शहर से बिलोंग करते हो और इतने सफल हो रहे हैं, क्या इसका कारण ये है कि छोटे शहर में लोगों के पास ज़्यादा वक्त है कैरेक्टर्स को नोटिस करने के लिए? क्योंकि आप, जैसे आपने खुद कहा था, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, आप सोसाइटी से उठाते हो चीज़ें। क्या उन छोटे शहर के लड़कों और लड़कियों के पास वो ज़्यादा वक्त है, ठहराव है कि वो अपने इर्द गिर्द चीज़ों को नोटिस करें और उसके चुटकुले बनाएं और कॉमेडी करें? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। दरअसल क्या होता है कि एक होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना, और एक होता है क्वांटिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, कि आपका, तो जब मैं अपने ज़िंदगी को जब पलट के अब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन अभाव में रहा, कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ रही वो बहुत, चूँकि रिसोर्सेज नहीं थे। अब जब जिस ओहदे पे पहुँच के जब मैं पलट के अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा खुशकिस्मत और क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह के तबके से मैं आता हूँ, ठीक है, बात ऑब्जर्वेशन की जब हम करते हैं तो क्या है कि फाइनेंशियल स्लैब की एक एक्यूरेसी होती है। ठीक है, मैंने अपने जीवन में इतने तरह के फाइनेंशियल स्लैब जंप करे हैं कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि मर्सिडीज़ में बैठा हुआ आदमी इस वक्त क्या सोच रहा होगा, पर मुझे वो भी मालूम है जो लड़का मेरे घर पे स्विगी का ऑर्डर लेके आता है, ठीक है, कि उसके जहन में क्या चल रहा है, क्योंकि ये सब मैंने जिया है। मेरे ख्याल से बड़े शहर के लड़के भी वैसा सोच सकते हैं। बात यह है कि क्या आपकी नज़र खुली है इस तरह की, है ना। वो बहुत सारा परवरिश से आता है कि आपके ऐसे माँ बाप के पाले हुए बच्चे हैं जो आपको सिखाते हैं कि बेटा सबको देखो, इनको देखो, इनको देखो, इनको देखो, इनको देखो, या फिर आपके माँ बाप आपको बंद अंडे में रखना चाहते हैं। हम माँ बाप के बारे में सब अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, पर बहुत माँ बाप कंट्रोल फ्रीक भी होते हैं, ठीक है ना। ब्लॉक में बच्चों को रखते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाना, वहाँ से वहाँ जाना, वो बहुत मोनिटाइज करना चाहते हैं, मॉनिटर करना चाहते हैं। मोनिटाइज तो खैर मैं करना चाहता हूँ। जाकिर ने आग लगा दी। ठीक है, चलिए। ओहो, Step out anyway. No, nothing, right? No, it's okay, it's all cool. 15 जुलाई 15 जुलाई Comicstaan आग लगा दी है। season 3 15 July. Yeah, it's okay. Is it a drill or what is it? Continue or no? Mock drill शायद. Wait, hold on. Acha, I just want to know one thing. Do we have enough time for Zakir to finish his answer, or do we have to evacuate? Such bata do. You are putting our hands up. It could mean anything. Yeah? Can continue? That never happened. Edit the last 30 seconds. Zakir, as you Yes, तो basically मुझे ऐसा लगता है कि परवरिश पे बहुत डिपेंड करता है ना, कि आपके माँ बाप ने क्या आपको उस तरह की जहनियत दी है कि आप लोगों को ऑब्जर्व करें। सारा खेल ऑब्जर्वेशंस का ही और वही है कि आपकी नींव कहाँ से आ रही है। और छोटे शहरों में क्या होता है कि क्योंकि माँ बाप इतना ध्यान नहीं दे रहे होते बच्चों पे, ठीक है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कम ध्यान देना भी जरूरी होता है बच्चे, ठीक है जी।
ये मैं आपको इसमें थोड़ा साइंस है, फिजिक्स है इसके अंदर, ठीक है। जितना शार्प होगा उतना पेनिट्रेट करेगा, जितना वो उसका एरिया बड़ा होगा उतना इम्पैक्ट उसका बड़ा होगा, पर उसका पेनिट्रेशन कम होगा। तो जब आपको ऐसी बात कहने की कोशिश करते हैं जो सब तक पहुंचे, तो उसकी जो डेप्थ है वो कम रहेगी, ठीक है। और जब कोई ऐसी बात कहें जो सिर्फ एक तक पहुंचे, तो उसकी जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसीलिए ज़बान का भी खेल है उतना। जब आप किसी एक से बात करते हैं तो सब वो उस तक पहुंचती है ना। जब आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जनरली करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम रहता है, ठीक है। ऑलराइट, यू नो व्हाट, मैं स्वयं जाकिर से पूरे दिन बात करना चाहती हूँ। अगर मुझे वक्त दे, लेकिन वक्त नहीं मिलता ना इनके साथ, तो इस वक्त आपको भी अपने वक्त का लिहाज करके हमें थैंक यू बोलना पड़ेगा। लेकिन वादा कीजिए कि 15 जुलाई को देखेंगे कॉमिक्सटान सीजन 3 on Amazon Prime Video. Please take a bow, ladies and gentlemen. You guys are so good. बैठे bow ले लो, bow. Thank you. या खड़े या आप. Once again, एक और चीज सबको बोलना चाहता हूँ. The show has been brought not just by the artists but also the crew. So thank you so much for the Amazon team right over there, the creators and the producers right over there. Name अगर आपको देखना है तो first episode के credit में देख लीजिएगा. Thank you. ओके, मैं डाल दूंगा. थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत भूख लग रही है. आपको मिलेंगे हम थोड़ी ही देर में. एक और फोटो लेंगे आप. बहुत मासूम लड़की है, बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती. न जाने किस दिल में कोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती. ये बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती. न जाने किस दिल में कोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती. और हाँ, सही बात है तो कहती है. हाँ, सही बात है तो कहती है. अल्फाज समझ लेती है, जज्बात नहीं समझती.